Hi students, you all must have started preparations for the board exams. I think pre-boards are around the corner. So let's take calculus now. Calculus, as you know, 5 chapters होते हैं इसमें and finals में आपका almost 40 marks, 50% आपका इस chapter इन 5 chapters में से आता है. तो once you are done with these 5 chapters, your 50% of marks is secured. तो इनमें 5 चैप्टर्स कौन से आते हैं शुरू, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. सो पहला टॉपिक जो इसमें कैलकुलस में आता है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट टॉपिक. बिफोर वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, लेट्स सी द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो 2020 में एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर और एक 4 मार्कर, सो contributed 7 marks. 19 में it was 1 marker and 2 4 markers, so 9 marks. 18 में 2018 में 2 markers and 2 4 markers, so total 10 marks. So and 17 में 1 marker, 2 marker and 4 markers, 7 marks total. And similarly for 16 and 15 it is 8 marks. So all in all you can assume that this chapter will be contributing 8 to 10 marks in your final board examination. So that is a lot of marks. So let's start with the concept of continuity. Okay. So let's start with the concept of continuity. Now what is continuous and how can you prove a graph to be continuous? General perception, यदि मैं continuous की बात करूं, general perception क्या होगा? That is मैं यदि किसी भी ग्राफ को बिना अपने पेन को लिफ्ट करते हुए यदि ड्रॉ कर दिया, so what can I say that the graph is continuous, that a function is continuous हो गया. So if I talk about mathematical definition of that, so what can I define is that a function f is continuous at c. Any particular उस डोमेन में किसी भी पॉइंट पे यदि आप continuous प्रूव करना चाहते हैं, so limit extending to c fx equals to fc. That is इसका क्या मतलब हुआ? एक फंक्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं, that is let us take a function fx which is 2 throughout its domain. तो इस फंक्शन को कैसे ये करेंगे? So if I draw the graph, it will be something like this. Now let us check the continuity of the function at any point. किस पॉइंट को ले लेते हैं? x equals to 3 ले लेते हैं. So x equals to 3 पे मेरे को इसको चेक करना है. So लिमिट सबसे पहले लगाएंगे. So इस तरफ से tending towards this, ये कहाँ पे ये कर रहा है? That is it is tending towards 2. लेफ्ट हैंड से भी ये टेंड टूवर्ड्स 2 कर रहा है, राइट हैंड से भी 2. एंड एट FC दैट इज F3 पे भी ये 2 हो रहा है. सो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस. मैं यहाँ से देख रही हूँ तभी भी उसकी इट इज़ अप्रोचिंग 2. मैं यहाँ से देख रही हूँ तो भी इट इज़ अप्रोचिंग 2 एंड एट 3 ऑल्सो इट इज़ 2. सो दिस कंडीशन इज बीइंग satisfied. दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx विल बी इक्वल्स टू F3. सो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया जब मैं फंक्शन मेरा थ्रू आउट द डोमेन सेम है. बट ऐसे फंक्शंस भी तो हुए, आपने अब देखे हैं क्लास 11th में, दैट इज फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट द डोमेन सेम नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ x टेंडिंग टू 5 हो जाएगा. fx की वैल्यू इज 5 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड 3 फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 0. अब इसकी ग्राफ बनाए यदि तो क्या बनेगा इसका ग्राफ? x ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू है 5 बट इक्वल टू साइन नहीं है. सो इट विल बी 10. फाइन, ये हो गया 5 है. एंड लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 है.
So something 3 is inclusive, something like this. Now, if I take the left hand limit, okay, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं चेक करती हूँ कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, 3 से लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में चेंज है. सो लेट मी सी द फंक्शन एट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कर रहा है. x इक्वल्स टू 0 में जब देख रही हूँ अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें x की वैल्यू क्या हो, fx की वैल्यू क्या हो जा रही, दैट इज 3. बट व्हेन आई एम अप्रोचिंग इट फ्रॉम द राइट हैंड, दैट इज राइट हैंड लिमिट लगा रही हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 5. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. क्यों? क्योंकि 5 और 3 अलग अलग वैल्यूज आ रही है. सो फॉर सच फंक्शंस दिस इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू गो फॉर लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड लिमिट. तो जब ऐसा फंक्शन मेरा आएगा, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल हैव टू टेक अ डिफरेंट, ये फॉर अप्रोच फॉर दैट, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करना पड़ेगा. मैग्नीफाई कैसे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट will be equals to right hand limit will be equals to the value of the function at that particular point. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स, एंड राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, and this will be fc. So the value of the function is, we have to check the right hand limit, the left hand limit, as well as the value of the function at that particular point. Why? Because the value of function is changing at particular point में change हो रहा है. So यदि आपका function is throughout its domain, उसकी value change नहीं हो रही है, so आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी हो गया. बट यदि फंक्शन चेंज हो रहा है, इट्स वैल्यू इज चेंजिंग, देन यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर वे ऑफ प्रूविंग दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम और नॉट. ये तीनों की वैल्यू कोइंसाइड करी, मतलब क्या है, फंक्शन स्मूथली उस पॉइंट पे, मतलब देर इज नो ब्रेक इन दैट फंक्शन एंड इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू नो हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज continuous. You can take x square plus 5, 3x plus 2, anything. Next is sine function, cosine function, tan function. All these are continuous, but you have to keep in mind a function can be continuous and only at the points in which it is defined. यदि undefined है तो function continuous नहीं हो सकता. Logarithmic function which is defined for x greater than 0 is a continuous function. Exponential function is a continuous function. Modulus function, remember the graph V shape, so that is also a continuous function. So all these are the examples of continuous function. So now let us see algebra of continuous functions. Now what does this algebra of continuous function says is that if two functions f and g are real valued functions and they are continuous at x equals to c, then what can you say about these two functions, that their sum, that is f plus g, will also be continuous at x equals to c. Their subtraction, that is f minus g, will also be continuous at x equals to c. F into g, their product will also be continuous, and f divided by g will also be continuous. But here in this case you have to be sure that g is defined at c, because denominator में है तो undefined हो गया, तो ये आप इक्वल टू 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन. सो फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस इट शुड बी डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो एल्जेब्रा का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आपने ले ली, साइन एक्स ले ली, और जी आपने कॉस एक्स ले लिया. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट cos x प्लस साइन x आपको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है. तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली आप साइन को कॉन्टिन्यूस कर दो, कॉस को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दो, एंड देयर सम विल बी कॉन्टिन्यूस. सिमिलरली यू कैन यूज
Sin x minus cos x will be continuous, sin x into cos x will be continuous, and sin x divided by cos x, provided cos x is not 0 at that particular point, it will be continuous. So this algebra can be useful for finding the sum, subtraction, multiplication and division of that two functions को continuous proof करना है तो हम algebra of continuous functions use कर सकते हैं. Now students, let us discuss the continuity of composition functions. यदि we have got two functions, that is f and g are two real valued functions and they are continuous, then you can say that FOG, that is composition of the fog function, is also a continuous function. Now let us see how to explain this. Let's take an example and see this. So जो आपको कंटिन्यूस करना है, एक फंक्शन ले लिया हमने hx इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, इसको आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसकी कैसे मदद ले सकते हैं कॉम्पोजिशन फंक्शंस की. लेट मी टेक fx इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड gx इक्वल्स टू एक्स क्यूब. नाउ इसका कॉम्पोजिशन करते हैं इन दोनों का, दैट इज FOGX will be f of gx which you have done in relation and functions. gx की वैल्यू क्या है, x क्यूब. सो f of x क्यूब आ गया, मतलब cos x क्यूब आ गया. तो यदि मेरा ये fx कॉन्टिन्यूस है, दैट इज वी ऑलरेडी नो दैट cos फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. gx, it is a polynomial function x cube, so it is also a continuous function. Since these two are continuous functions, so therefore their composition, that is FOG, will also be a continuous function. So this particular concept we can use when we have to prove such type of questions in which the function is a composition of two functions. So we can use this concept. So that finishes that. I finish with the concept of continuity. So students, we are done with the concept of continuity. We are done with that. In my next video, I'll be starting with exercise 5.1. जो आपके थोड़े बहुत doubts रह गए हैं, that all will be cleared when you are coming across questions and doing those questions. So all your doubts will be cleared. So students, if you are liking my videos, if they are helping you in your studies, please like, share and subscribe, and also recommend my videos to your friends. Thank you so much.